Hello everyone, this is MsDeep Singh Shekhawat and today we will be discussing mystery of time in distributed system कि हमें time calculate करना है. There are certain scenarios where we need time to be calculated in our laptops, in our machines, in our servers, in the distributed cluster of servers, in the databases. There are a lot of scenarios where we require time. So how can we actually do it? How can we calculate that time? And what are the scenarios where we can face issues, and what are the different clocks? All those things. How can you overcome with these scenarios? How can you overcome with these fatal issues? So we'll be discussing all those in this time series playlist, where we'll be discussing all about this, that what is the mystery of time, how can you resolve this when we talk about distributed system. क्योंकि भाई अपना सिंपल सिस्टम है, एक लैपटॉप है, उस पर आपने जो टाइम सेट किया मेरी मर्जी के हिसाब से वो टाइम आ जाएगा. बट व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, व्हाट अबाउट द सर्वर विच इज प्लेस्ड इन यूएस, व्हाट अबाउट द सर्वर विच इज प्लेस्ड इन मुंबई. ठीक है, तो वहाँ पे आप मैनुअली जाके लाइक मल्टीपल सर्वर्स में यू कांट अपडेट द टाइम कि हाँ दिस इज द करेक्ट टाइम, दिस इज द व्हाट आई टाइम नीड एंड दिस इज the correct time as per me, but this is not the correct time as per someone else. ठीक है, so all those scenarios, all those things we will be discussing this. Let's start with the first video. We will be focusing basically on the type of clocks which you can use to calculate this time. कि भाई घड़ी चाहिए हमें, टाइम कैलकुलेट करना है तो घड़ी चाहिए, तो वो कौन सी घड़ियां हो सकती है. तो हम दो पॉइंट्स के ऊपर, दो क्लॉक्स के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करेंगे आज. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द मोटिवेशन. तो इतना ज्ञान मैंने पहले ही बोल दिया है कुछ कुछ, बट बेसिक मोटिवेशन की बात करते हैं हम. लेट्स टेक अ सिंपल सिनेरियो वेयर वी माइट नीड कि व्हाट्स द टाइम. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज योर हैंडसम यूजर मनदीप एज यूजुअल. दिस इज योर हैंडसम यूजर मनदीप एंड मनदीप इज मेकिंग कॉल टू ए सर्वर. मनदीप बोल रहा है कि मैं google.com पे हिट कर रहा हूँ अपनी कॉल. Okay, Mandeep is hitting a call to google.com servers and want a response to a particular search query. Now what we are interested in, we are interested in the time taken for this operation. ठीक है, so this might be some network latency. ठीक है, this is the computer of Mandeep where from where he is making the calls. Now this is the time where it is being the network latency basically. ठीक है, and there might be some certain time which is taken by the Google servers to serve that query. ठीक, तो if we talk about total time it will be 2d plus r. समझे बात कि d पहले लगा फिर d वापस आए हम, और r टाइम में कुछ प्रोसेसिंग हो रही है ऑन द गूगल सर्वर्स. सो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ दिस टाइम. नाउ व्हाट वी वांट इज, वी वांट कि when we say time taken, we have to we require some kind of clock. The clock started at time t1 and then clock ended at time t2. What is t2 minus t1? This will give me the latency for my operation, for the latency of my search operation. So I'm interested in this t2 minus t1. So this is the one scenario where you might need, you will need कि time क्या है. What is the time right now? What is the time after my operation completed, so that I can take the difference and calculate the latency. Another example could be conflict resolution by last right wins algorithm. So if we talk about distributed systems, right, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आई विल जस्ट गिव यू ए स्मॉल जिस्ट दैट लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कंकरेंट राइट इन डेटाबेसेस. ठीक है, DynamoDB का एक हम एग्जांपल लेते हैं. इन DynamoDB देयर आर टू मल्टीपल यूजर्स, देयर आर टू यूजर्स, एक मनदीप है, एक उसका मनदीप का कोई और है, मनदीप का बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, मनदीप के दोस्त हैं क्या? एक भी दोस्त नहीं है मनदीप का. तो दिस इज आर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वेयर द टू यूजर्स आर राइटिंग concurrently on different nodes. This is your database cluster and we want to ensure if the write is made on the same primary key. ठीक है, सेम पार्टीशन. सो बेसिकली वी हैव टू फिगर आउट विच इज द मोस्ट रिसेंट वन. सो वन सिंपल एल्गोरिथम विच यू कैन यूज इज लास्ट राइट विंस एल्गोरिथम. की सबसे लास्ट में किसने लिखा, वी विल अज्यूम दैट एज द मोस्ट रिसेंट वन. बट फॉर दैट, अगर हमें सबसे रिसेंट वाला चेक करना, आई नीड टाइम कि उस टाइम पे उस वक्त, ये भी टाइम ही होता है व्हाट वाज द टाइम एट दैट टाइम. समझे बात. सो फॉर दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज वी नीड कैलकुलेशन. सो टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन टू क्लॉक स्पेसिफिकली. फर्स्ट वन इज वॉल क्लॉक एंड सेकंड वन इज मोनोटोनिक क्लॉक. सो इफ यू टॉक अबाउट वॉल क्लॉक, अपनी दीवार वाली घड़ी. ठीक है, दीवार वाली घड़ी, या फिर आपने हाथ में जो घड़ी बांध रखी है, मनदीप ने बांध नहीं रखी, पैसे नहीं है बिल्कुल भी. तो let's first discuss about wall clock. So in wall clock, if we talk specifically about Java, this is the line which you can use, this is the code line which you can use to get the time using the wall clock. Basic idea of the wall clock, system.current time millis. आपने काफ़ी बार यूज़ किया होगा.
करते हैं, मैंने काफी बार यूज किया है. सो यू वी यूज दिस system dot current time millis to calculate the time. Now what this function do, it returns the current time in milliseconds. Granularity depends on underlying OS. This implementation कि आपने जावा में कुछ लिख दिया है, it will depend on the system calls of the Linux or any of the operating system. Let's say you are using Windows, ठीक है, तो वहाँ पे it will call that Windows का specific function to get the time of the machine, right? Now before going to more details here, if wall clock का अगर हम एग्जाम्पल है, दिस कैन बी कंपेयर टू आर वॉल क्लॉक्स एट होम. वी कैन रीसेट इट थ्रू सम बैकवर्ड टाइम और फॉरवर्ड टाइम. ठीक है, कि मेरी हाथ में घड़ी है, मेरे को 5 मिनट आगे रखना है. द वॉल क्लॉक आई हैव सेट एट द प्राइमरी क्लॉक आई हैव सेट एट माई होम. आई नीड कि हाँ ये घड़ी हमेशा 10 मिनट आगे चलेगी. ठीक है, बट वी माइट नॉट नीड दैट काइंड ऑफ फंक्शनलिटी इन आर सिस्टम्स. बट कैन दैट हैपन इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स? कैन द टाइम मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड? मेरे को 10 मिनट आगे करना है, मेरे को 5 मिनट आगे करना है, मेरे को बैकवर्ड जाना है. कैन दैट बी पॉसिबल सिनेरियो इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? अगर इफ दैट इज अ पॉसिबल सिनेरियो, देन इट माइट कॉज इश्यूज कि टाइम पीछे जा रहा है भाई. ठीक है, तो लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट द लेटेंसी हियर. आई वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ t1 minus t2, but what if this time moved forward? So t2, there is a possibility that t2 is less than t1, and the time, the latency which is latency for that particular operation is negative. ठीक है, ऐसा भी कभी होगा कि मेरे to calculate the latency or like the time taken by the complete operation is negative? That can't be possible, right? Time always move forward, but in case of distributed systems it is moving backwards. So that is a possible issue, but can that happen in case of this wall clock? Can that happen? So let's talk about the underlying OS. We mentioned that the system dot current time millis depends on the underlying OS कि वो calculate कैसे होगा. The granularity will depend on the underlying OS. So it will be dependent on the system call, which is get time of the day. ठीक है, for all those details you can directly go to Java documentation, like all those details, right? If you want to read more about this or like any of the methods I'm describing, you can directly go to the Java documentation. And for this function specific system calls, you can check directly man page of Linux. Right now we are discussing specific to Linux. So get time of the day, it is affected by discontinuous jumps in system time. So let's say the sysadmin resets the time. ठीक है, another could be that NTP synchronization, or there could be any scenarios. ठीक है, कि मैंने टाइम रीसेट कर दिया, द सिस्टम वाज इन पोज स्टेट, सो दैट कोज्ड सम इशू इन द टाइम, की सिस्टम पोज पे था, इट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम व्हेन इट लेफ्ट ऑफ. ठीक है, सो इन दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज देयर कुड बी discontinuous jumps in system time, and the issue we were talking about, can the system clock move forward and backward? Yes, in this case of system dot current time millis is based on wall clock, and time can move forward or backward जाएगा. We will not be able to calculate specific operation. Let's say I want to calculate duration, specific use cases. Let's say I want to calculate the latency, the example which we talked about. Mandeep wants to hit the Google server and want to calculate the latency of that round trip. पर क्या वो हो सकता है? वो हो सकता है definitely, but there can be issues in that operation, right? So this is all about wall clock. And if we talk about conclusion, the time can jump backward in wall clocks and might not be suitable for calculation of time difference, right? So this is what we discussed. Let's move to another example, another type of a clock, which is called monotonic clock. So if we specifically talk about monotonic function in mathematics, what it means it is a ever increasing function, हमेशा बढ़ता ही रहेगा. This is your function, this is y-axis, this is axis, it will always be increasing function, it will never be decreasing. जब हम बात करते हैं t1 and t2 times की, the t2 will always be greater than t1. The time can may be negative or may be positive, I don't care about that. But if I want to calculate the duration from t1 to t2, t2 minus t1 will always be positive. So ड्यूरेशन वाला यूज केस अपना काफी अच्छे से सोल्व हो जाएगा. बट लेट्स मूव इनटू मोर डिटेल्स. इन केस ऑफ जावा वी कैन यूज सिस्टम डॉट नैनो टाइम टू कैलकुलेट दिस. ठीक है, तो similar to the system dot current time millis, you can directly go to the Java documentation, but this is the gist what this system dot nano time represents. Not related to any real time clock. यहाँ पे ये किसी घड़ी से related नहीं है. This is basically it can be negative, which I mentioned, right? In case of clock which you see on your wall, the time will never be negative, but the difference we were taking can be negative. ठीक है, so use on it is based on timestamp comparison, same Java, same JVM instance. ठीक है, so it might not be a suitable use case to be used in distributed system because it is specifically based on one single JVM instance where it is running. It is a monotonic if support is available with OS. ठीक है, so we mentioned that in case
if we use just system dot nano time, this will be monotonic, but this support should be available with the underlying OS on which अगर मैं Linux पे अपना Java program run कर रहा हूँ, then that Linux system, the Ubuntu system or whichever version of that particular OS I am using, that version should support monotonic functionality. If that operating system supports that functionality, then this java.nanotime will give me monotonic time. What about distributed systems? If we talk about Linux system call, it is clock underscore get time. Now, what about distributed systems? Let's take an example. So, if we talk about that latency example, right, this will be perfect solution for using that kind of scenarios if we want to calculate the duration. ठीक है, मेरे को ड्यूरेशन चेक करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सो फॉर दो सिनेरियोज यू कैन यूज सिस्टम डॉट नैनो टाइम. वी शुड नॉट प्रीफर system dot current time millis because that can cause issues, right? So what about distributed system example? If I want to calculate, if I want to do the conflict resolution basic time on different machines, this will not be a suitable solution in that scenario, right? हमने बात करी कि हमें conflict resolve करना है, so I want to check कि which one is the most recent time. ठीक, I want to calculate which one is the recent time so that I can decide कि इन concurrent users में सबसे recent कौन है and that is the winner. ठीक है, but in this case I will not be able to decide that because it is based on the single JVM instance का time. ठीक है, तो yeah, in case of last range monotonic clocks will not be useful here. We require actual time operations happened on different nodes. What about the time unsynchronization issues in machines? ठीक है, तो two things, right? In case of system.current time millis, we mentioned that there can be time and synchronization. When we want to decide that this operation went first or this operation went first. So in these two scenarios, the time clock which is running on both these machines, there can be time asynchronized issues. It can be due to anything. Hardware में दिक्कत आ गई, system post चला गया, system admin का मन कर रहा था time change करने का. That can be any issues, but the final result is that there is some unsynchronization in the time. So we need some kind of mechanism. We need some kind of mechanism to resolve that. NTP is one possible solution to use that. NTP is basically network time protocol which is used for synchronization between the different machines. Let's say this is your cluster. This is your cluster and you have multiple nodes in here. So if one particular node is going unsynchronized by the time, either you kill that node or you synchronize that time to particular time. So let's say अगर ये time में आगे चला गया T2 में, ठीक है, तो NTP will रीसेट दिस टाइम T1 के ऊपर. ठीक है, दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कि अगर यहाँ पे आपको ड्यूरेशन निकालना है फ्रॉम T1 टू T2, फ्रॉम T1 टू T2 देयर कैन बी इश्यूज बिकॉज यहाँ पे आपने T2 को बैकवर्ड मूव कर दिया. एनटीपी ने यहाँ पे बैकवर्ड मूव कर दिया बिकॉज द टाइम वाज अनसिंक्रोनाइज्ड. इट वाज मूविंग फॉरवर्ड विद अ मोर स्पीड एज कंपेयर टू दैट T1, द मशीन विच इज कैलकुलेटिंग T1. ठीक है, इट कैन बी बेस्ड ऑन एनी ऑफ द इश्यूज. कोई भी इशू हो सकता है. बेसिकली आई वांट टू डू द सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, तो एनटीपी इज द वन पॉसिबल सॉल्यूशन. इट इज नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन, but NTP is a one possible solution which can be used for synchronization. In follow-up videos we will be discussing more about NTP. And by the way, NTP is not used for resolving conflicts. There is another mechanisms which are used, Lamport clocks, vector clocks. हम काफी सारे बाकी clocks के बारे में discuss करेंगे. And like if you want to calculate कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, if you want to decide the order, what is the other ways which you can use, what are the type of clocks you can use for those kind of scenarios in kind of distributed systems. So we will be discussing that in upcoming videos. So till then, stay safe. Tata. Bye bye.